Hello everyone, welcome. Happy to meet everyone and also happy to be interacting with you on this platform. Hello Swaroop, Shivani. Yes, Shivani, of course. Shivani has a question. Yes, Shivani, we'll get to the questions shortly. Hello Manish. Hello Deepika, Shikha, Aditya, Saikat. Good evening to you too. So hello Garima. Oh, you're in your third year at BSc. That's good. What time to start preparing for the UPSC then? Which I assume is why you're here today. We'll talk about that. I'm sure you have questions. Vinumita, welcome. Shivani, welcome. I have allowed you the permission to talk if you'd like to say something. You can go ahead. Or let's start the session. Voice is low. How good or bad is it now? Is it better? Is it better now? Okay. That's nice. Okay, perfect. Very good. So what I'll do is, here's what I have in mind. I'm very happy to first of all be here. First of all, very happy. Always gives me a lot of pleasure when I can interact with students directly. If I could have it my way, अगर मेरा बस चलता, तो मैं तो physical interaction prefer करता है, where we can actually sit in front of each other and have a conversation and talk. And so there is a gap of there is a space and time gap between us, but it doesn't mean that we can't get the maximum out of it. And we'll have, I think, a lot of interesting discussions. I know essentially what you guys have in mind, because अब इतने सारे students के साथ interaction हो चुका है मेरा कि I realized that they are mostly similar problems that keep popping up. कभी-कभी you have peculiar problems which can, be very difficult to handle. So we'll talk about that, and we'll have also questions. I don't know how many of you know about me right now. I don't know what you have heard. I don't know what impression you have, but I want to take a couple of minutes. I'll take maybe 5 minutes to tell you what I am, who I am, what I do, why I do it. Why are we here today? With your permission, I will tell you that if you allow me to. Should I do that? All right. Vishwas says yes. Okay. So I'll give you, so it's a long story actually, but I'll give you the gist of it, and I'll go through it very fast, and I'll not waste time, and I'll just tell you why we are here today. I am, I was a fat kid, fat plump kid, and I was not a very good student at all. And the tragedy of my life, all through school life, in school life, is सबसे बड़ी life की problem ये थी that I was in my mother's school. My mother was a teacher there. And because my mother was a teacher there, I was always an embarrassment to her. I was always an embarrassment to her because I was a staff ward, and there was all this competition, और बहुत एक pressure feel होता रहता था कि you're not doing well enough. So it was a torture for me, and it was a torture also because now I realize, now I am 36 years old. I have had a lot of experiences in life, good, bad, ugly experiences. I have seen how the government works. I have seen how people function. I now understand what human nature is like, primarily also because I am a psychologist. I did my clinical psychology. But essentially, जब उस time पर अब मैं देखता हूँ hindsight में, तो actually में हो ये रहा था कि I was a severely attention deficit. मुझे attention deficit disorder था, बहुत severe, और स्कूल में वो diagnose नहीं हुआ, और क्योंकि वो diagnose नहीं हुआ, I was never able to really concentrate. कुछ ऐसा हुआ, कुछ 6th और 7th standard के आसपास कि somehow I just lost it. I lost track of everything that was happening. मेरी एजुकेशन में ही हॉल्ट आ गया, मुझे समझ में ही नहीं आया उस दिन के बाद कि हो क्या रहा है.
कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स रहे होंगे मैथ्स के या जो भी थे. मेरी इंग्लिश ठीक थी, उसके अलावा मुझे कुछ समझ में नहीं आता था. एंड आई वाज जस्ट वेटिंग. आई रिमेंबर नाइटमेयर होते थे. आई यूज्ड टू हैव नाइटमेयर बिफोर गोइंग टू स्कूल. और मैं वेट करता था कि कब ब्रेक होगी. मैं वेट करता था कि कब वहां से मैं निकलूंगा. और हमेशा मेरे प्रेशर, जो मेरे सारा स्कूल मेरा ऐसा नाइटमेरिश टाइप एक्सपीरियंस रहा. Ultimately, my mother got fed up, and I was such a big embarrassment. Admittedly, I was not making life easier for her also. She changed my school. She put me in a different school. वहाँ पर I had a better experience, but फिर वहाँ पर भी I was not able to perform academically. And by this time, मुझे ना resentment हो गई थी मुझे. I had developed resentment. Srija, you know, I understand what you mean, Srija, but वो एक resentment हो जाती है. If you have many negative experiences, so I lost faith. ये टीचर्स, एजुकेटर्स, ट्यूटर्स, पेरेंट्स, मेरे को कोई फेथ नहीं रहा इन पे. मुझे लगा कि दे विल नेवर अंडरस्टैंड. जो मुझे करना है मुझे खुद ही करना पड़ेगा. तो फिर मैं एक अलग ही पाथ पे निकल गया अपने. इट वाज कंप्लीटली डिफरेंट पाथ. आई क्विट द मेन स्ट्रीम. मेन स्ट्रीम में तो ये होता है, जैसे आप बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा, आईआईटी करते हैं लोग, AIEEE देते हैं, कोई मेडिकल कॉलेज में जाने की कोशिश करता है, कोई DU में एडमिशन लेता है. I quit that mainstream. मुझे करना ही नहीं है ये. This is not something I want to do at all. I'm not interested. This happened in school. This school की बात है. School और college के बीच के transition की बात है. Just when you are, going through that rebellious phase, so I dropped all faith in this education system. In fact, I had resentment for it because they made me feel stupid. मुझे पता था मैं बेवकूफ नहीं हूँ. मुझे पता था कुछ तो अंदर है. मुझे ये नहीं पता था क्या है. बट हाँ, इतना ज्यादा उसमें एक नेगेटिव फीडबैक का एक्सपीरियंस होने लगा कि मुझे लगा ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ही खत्म हो जाएगी. और एक बच्चे के लिए ये अच्छा नहीं होता है मेंटल हेल्थ के लिए. एनीवे, फास्ट फॉरवर्ड, स्कूल फिर भी उसके बाद जबरदस्ती. सो आई टेल यू एन इंटरेस्टिंग एपिसोड. स्कूल में मेरे कुछ एवरेज से मार्क्स आए 12th में. जैसे तैसे मुश्किल से मैं कुछ मार्क्स ले आया 75 के आसपास. I got admission in BA Psychology. BA Psychology, now I live in Delhi. तो अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम ये है कि BA Psychology में सीट्स नहीं है. There are no seats for men at all. BA Psychology में most of it is for women. You will find psychology being offered to women in women colleges like Miranda House, etc. But somehow, as it turns out, that लड़कों के लिए there are only 20 seats. I got that. I got admitted into BA Psychology. My parents and everyone in the society did not let me join. I went and paid the fees in that college. They did not let me join and they said नहीं engineering करनी है. Engineering करनी है. अरे engineering नहीं करनी, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें. नहीं, मैंने engineering ही करनी है. लाइफ में आगे क्या होगा? How will you earn money? How will you do this? That's nonsense that they fed me. मैं ठीक है, if that is what you think, then that is what I'll do. तो मतलब इतना मैंने कॉम्प्रोमाइज करके गलती करी. आई लिसन टू देम और मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में चला गया. आई वेंट टू द इंजीनियरिंग कॉलेज. आई स्वेयर, आई किड यू नॉट, आई हेटेड इट. इट वाज हॉरिबल. आई डिडंट अंडरस्टैंड अ सिंगल थिंग. आई हैड नो पैशन फॉर द सब्जेक्ट. I did not like the atmosphere. It was all suffocating, and I felt like it's just now that I've escaped this education system, and now I've got myself in a worse one. And again, I kid you not, I stopped going. I basically fundamentally dropped out of college, more or less. I managed somehow to clear it, but I started to do bodybuilding in that time. I was doing bodybuilding, and everyone was doing engineering, getting jobs in TCS and Microsoft and this and that. And I was doing bodybuilding. I was doing competitive bodybuilding. मुझे लगता था ये पढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं फायदा. There's nothing in it. Or I will become an athlete. I will become the world champion. That was my dream, and I was obsessed with that dream. And I was doing very well. And I was actually on my way to becoming a very successful athlete. I had won Mr. Delhi competition. I had competed for India. I had won a few powerlifting championships. I had won the bronze medal for India in the Asian powerlifting championship also by that time. That was what had happened. Now everything was going fine. My career and my weird mainstream se hatke jo bhi path tha, it was ongoing. What essentially happened was, then I was selected in the Indian rugby team. Now in India there is some rugby. Rugby is a contact sport. It is not too prevalent, but it is there. I got selected in this team, and there was this practice match. In the practice match there was a fight. फिजिकल फाइट हो जाती है रग्बी में. आई एम नॉट अ वायलेंट गाय, बट हो गई फाइट वहां पे, जैसे मैचेस में कभी कभी हो जाती है. अब इन दैट फाइट आई गॉट इंजर्ड वेरी बैडली.
बहुत ज़्यादा injury, and the reason of the injury was that I was hit over here and I had my whole cheekbone was broken, shattered, and I started to bleed. जैसे ही bleeding start हुई, सारी fight रुक गई. Immediately everyone was just shush, something bad has happened. आज तो हो गया काम, किसी को किसकी आंख 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 फट गई या कुछ हो गया, आज तो पुलिस आएगी और हमको जाना पड़ेगा अंदर. That is when the fight stopped. They took me to the doctor. The doctor decided to patch me up. It took a long time. Fast forward to after the operation, he said for 21 days you cannot get up from your bed. आपको bed से नहीं उठना है क्योंकि if you are to get up horizontally and you stand vertical, then the wound will open because your wound is inside. 21 days. I was a hyperactive, hyper energetic guy. I was not prepared for 21 days of silence, 21 days of just sitting there. And it drove me, first it drove me mad. And then it drove me into some weird state of peace, of some centeredness. And in that weird state of centeredness, I decided that अगर कुछ भी हो, कुछ भी, अगर मैं अपनी बॉडी को चेंज कर सकता हूँ अपने विल के हिसाब से, अगर मैं इंडिया की रग्बी टीम में सिलेक्ट हो सकता हूँ विदाउट हैविंग प्रायर एक्सपीरियंस इन दैट, तो मैं और ये इंटेलेक्चुअल काम क्यों नहीं कर सकता, ये जो पढ़ाई लिखाई वाले काम होते हैं अभी तक जो मुझे नहीं समझ में आए, व्हाई नॉट? By that time I had developed confidence because I had tasted victory, success I had tasted. I thought success वहां पर भी same ही fundamentals होते हैं. But उस time तक, now you see what happens is you get to experience pain and you get to experience loss. And bodybuilding, if you do bodybuilding, the bodybuilding का loss is not normal loss. It is a very hard hitting loss. You imagine this, you are literally standing in front of the people without clothes. So when you lose in that, in front of thousands of people, एक अलग लेवल का झटका लगता है ईगो को. It hurts more than anything imaginable. आपकी ईगो शैटर हो जाती है. और मैं 3 बारी हारा इतने बुरी तरीके से हारा कि it is not even worth mentioning. There were 5 guys in my category. I was last. For the first year I competed, second year I competed. Ultimately I won that competition. My confidence was restored. अच्छा ठीक है, अब ये हो गया ना, अब और भी चीजें हो जाएंगी. I will tell you about that, Deepika, and we will talk about mains answer writing also. Fast forward, went into the UPSC, did not understand anything. Ultimately, something happened to me around 6 months, 1 year after I started preparation. I did not benefit from coaching institutes too much. I was reading something when suddenly something happened and I had this weird intellectual awakening. There's no other way to describe it. I fell in love with psychology. That was my first intellectual love. For the first time, it started to hit me. ये तो बहुत interesting चीज है. उसके बाद मुझे problem नहीं हुई, frankly, because I had developed deep interest in the subject itself. Curiosity ही इतनी ज्यादा हो गई थी कि I was reading effortlessly. तो मेरा exam हो गया clear. होते फिर then I wanted this to happen to other people, but it was not possible. It was not easy to do because, of course, you get very busy in the job. बहुत busy हो जाते हैं लोग. करते 2 years ago I started a mentorship program. I wrote the book. Somebody was mentioning, read the book, and I appreciate that. So I did all of these things, and I realized that I cannot do the job and I cannot do this simultaneously. एक ही चीज करनी पड़ेगी. And this is something which is very difficult to swallow. How can somebody who has such a lot of who has this job which is so sought after, how can he just quit? But I quit. I actually quit. I resigned. मुझे लाइफ में अब कुछ और बड़ा करना है. I want a bigger mountain to conquer, and the mountain I want to conquer right now is you guys at this particular age that you are, at this stage in life that you are. I think this is the point of maximum impact. You guys, like me, are now out of the education system. Education system से आप बाहर आ गए हो, अभी आप transition phase में हो. आगे जाके we don't know क्या होगा. Maybe you will get into the civil services, maybe you will do something else. But अभी आप बीच में हो. You are also the most motivated people in the country. नहीं तो you would not be doing all this virtually impossible, difficult thing you have chosen to do. So you are that category. This is the category I want to impact. This is the point of my impact. I cannot make that impact in school, college. जो system चल रहा है वो चल रहा है. Here I can make an impact. I can not only tell you what to do with the UPSC exam. What I want to do is to change this whole dimension so that once you do this,
चाहे यूपीएससी हो या ना हो, आपको कोई रोकने वाली चीज ना बचे। यू शुड बी एबल टू अचीव योर पोटेंशियल। जो भी स्ट्रेंथ्स हैं आपको पर्सनैलिटी की वो पता हो, यू हैव अवेयरनेस, और उसके बाद यू कैन गो अहेड एंड डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ। आई एम एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। आई वॉज जस्ट अ पहलवान। अगर मैं वो कर पाया तो आप भी कर पाएंगे। This is my whole story. This is the reason we are here. And now I would like to know more about you. I know that Deepika is very eager. Deepika, you can raise your hand and ask your questions. We'll have a conversation. बिल्कुल बिना hesitation के दिल खोल के जो बोलना है बोलिए. Let us hear what you have to say, and I am very eager to know that. Whoever would like to raise their hands can do so. Deepika will obviously go first because she is very, very eager. Deepika, please go ahead and speak. Ask to unmute. You can, Deepika, you can unmute and ask your question. Deepika does not want to speak. What about Shivani Sharma? Shivani, you can go ahead if you want. You'll have to unmute your mic in order to speak. Yes, sir. Good evening, sir. Yes, hello, Shivani. Hello, sir. Yes, Shivani. Tell me, what is your question? How is your preparation going? सर मैंने अभी प्री दिया था तो मेरा हुआ नहीं उसमें, तो अभी मेंस की आंसर राइटिंग स्टार्ट कर रखी है। ये दिस वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट? यस सर। ठीक है। व्हाट इज द मार्जिन? कितने मार्जिन से रहा है? सॉरी सर, व्हाट इज द मार्जिन ऑफ मार्क्स जो कम थे इस बारी? सर अभी 23 के मार्क्स आए नहीं है इसलिए। हाँ, but what you must have calculated, any estimate? What is the margin? How much work is required? Was it close or were you not that close? सी सेट वीक रहा है। Okay. तो सर आंसर राइटिंग समझ नहीं आ रही, कहाँ से करे शुरू, कहाँ से नहीं। ठीक है। आंसर राइटिंग के बारे में आई विल say something, but I will say something right now to tailor to your question. So you are a beginner, almost a beginner, not exactly a beginner, क्योंकि आपने तैयारी करके ही दिया होगा एग्जाम। Yes, अभी आंसर राइटिंग तो इसमें क्या है, देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ राइटिंग चैलेंजेस इन मेंस। एक है एसे, एक है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग में सारा कुछ आ गया, ये ऑप्शनल, एथिक्स, जीएस 1 2 3, दिस इज ऑल आंसर राइटिंग, एंड देन देयर इज एसे। तो ये द प्रॉब्लम इज इन आंसर राइटिंग कंटेंट इज इंपॉर्टेंट। कंटेंट सीखना और डाइजेस्ट करना जरूरी है, लिखना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यस सर। ऐसे एक अलग बॉल गेम है थोड़ा सा। लिखने का स्किल और लिखने की जो भी एस्थेटिक्स है वो उसमें निकल के आती हैं, और उसमें वो डिमांड ही है इनफैक्ट उसकी। मेरे हिसाब से आपको ऐसे राइटिंग से स्टार्ट कर देना चाहिए, ऐसे राइटिंग से स्टार्ट करना चाहिए, और अगर लिखने हैं आंसर तो एथिक्स के आंसर से स्टार्ट करना चाहिए। अब व्हाट इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट? एंड आई वुड से if you can manage it, start to write previous year questions and start with basic questions. For example, जैसे let me say give you a homework, simple एक वो कर देते। Okay sir. In 200 words, if you can write for me what is the difference between fundamental rights and fundamental duties। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा, बट लिखने में आसानी नहीं होगी क्योंकि 150 वर्ड का वो है स्कोप। आप नोटिस करोगे कि चैलेंज ये नहीं है कि नॉलेज उसमें है या नहीं है, चैलेंज ये है कि कैसे लिखा जाए अच्छे से उसमें। तो ट्राई दिस, अटेम्प्ट दिस, ओके सर। एंड स्टार्ट विद ऐसे। फिर हम बीच में बहुत मिलते रहेंगे और हम बात करेंगे आंसर राइटिंग में। आई विल ट्राई कि मैं आपको कुछ चैलेंजेस दे पाऊं। चैलेंजेस से मेरा मतलब सम सैंपल क्वेश्चंस व्हिच यू कैन राइट एंड व्हिच आई कैन रिव्यू, जिसके बारे में मैं आपको फीडबैक भी दे पाऊं। तो ये हम करेंगे। ओके सर। सर नोट्स अवेलेबल होंगे? किस चीज के नोट्स? कौन से सब्जेक्ट के? हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल,
I don't know, honestly. Okay, About sir. Hindi literature optional, I'm not sure. Essay, I am very sure because I am the one creating them. GS 1, 2, 3, I think also you will find. On Testbook has a huge database, not only of notes but of classes. So उसमें you could actually utilize that, and we'll see क्या क्या हो सकता है. Whatever, I've started this mentorship program for 2024 just now. आज ही start हुआ है वो. When you come into that program, it is a free program. उसमें बहुत सारे नोट्स मैं भेजूंगा. I'll try to send जो मैं भेज सकूंगा मैं भेज दूंगा उन्हीं में. PDF email पे आ जाएगा आपको. Okay, sir. So, Deepika wants to speak or no? No. What about Dilpreet? Dilpreet, you want to ask? You can go ahead. Yes, good evening, sir. Good evening, Dilpreet. और सर कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया सर. सर एक्चुअली मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा था सर. सर ऐसे नहीं पता लग रहा कि उनको जैसे एक बार पढ़ दी, जैसे +1 की एंशिएंट हिस्ट्री है आर एस शर्मा की, हाँ, तो सर उसको याद करें दूसरी बार में या ऐसे ही पढ़ते चलें? मैं एक फ्रेमवर्क बताता हूँ दिलप्रीत, जो यस सर. हम यूज करते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ में 2 साल से यूज कर रहा हूँ. ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, सबके साथ होती है. पहली Yes, बारी sir. पढ़ने में यू कैन नॉट डाइजेस्ट द होल बुक. उसमें बहुत डेटा है, बहुत कहानियां हैं, बहुत नाम है. ऐसा हो ही नहीं सकता कि याद हो जाए. Yes, sir. There is something called hexatask method. I had created this system. ज्यादा उसमें कुछ है नहीं, सुनने में complicated लगता है, बड़ा simple है. Hexatask method कहता है, we'll first do big picture formation, then first reading, then second reading, analyze previous year question, revision testing. hexa मतलब 6, task मतलब task, 6 tasks. तो history तैयार करने के लिए we are doing 6 tasks. Big picture formation, first reading, second reading, analyze. आपने जो करी वो आपने करी फर्स्ट रीडिंग. आप बता रहे थे, यू सेड आपने करा ना फर्स्ट रीडिंग. यस सर. व्हाट आई सजेस्ट इज एक बार उससे पहले हम कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें, क्यूरियोसिटी जगा लें बाय वाचिंग सर्टेन डॉक्यूमेंट्रीज. हिस्ट्री की डॉक्यूमेंट्रीज कुछ हैं, देयर इज अ प्लेलिस्ट आल्सो. उससे थोड़ा सा ये है कि व्हेन यू रीड अ बुक उसके विजुअल्स आपके दिमाग में आ जाएंगे. याद रहना और पकड़ना, उसकी जो पूरी कहानी होती है एक, वो अच्छी क्लियरली समझ में आ जाएगी. So we recently, I had a detailed session with Kawaljeet Singh, who is a professional teacher of history, and he also teaches a textbook that I am sending to you in the next 3-4 days. वो conversation 1 घंटे की conversation है. That conversation itself is a crash course का crash course, you might say. That will help you in that. आपका क्वेश्चन ये था कि फर्स्ट रीडिंग के बाद दूसरा करना है नहीं करना है. एनसीईआरटी को अगर विपिन चंद्रा पढ़ रहे हो, कम से कम 3-4 बार पढ़नी पड़ेगी टू डाइजेस्ट कंप्लीटली, और शायद उससे भी ज्यादा बार, मल्टीपल बारी पढ़नी पड़ेगी, और उसमें इतनी जल्दी यू कैन नॉट कैप्चर एवरीथिंग. सो माय सजेशन इज वंस यू रेड इट you will have to read it again, but this time you read it after you watch that video about which I am mentioning, जो कवलजीत सिंह के साथ सेशन है. That will help you. ठीक है सर. जैसे एक बार पढ़ दी तो दूसरी बार मतलब कि कई कहते हैं ना पूरी बुक की याद है किसी बंदे को, उसने बुक की सुना दी, ऐसे तो नहीं होता सर? कुछ रेयर केसेस में होता होगा. कुछ लोग कहते हैं कि सम पीपल हैव फोटोग्राफिक मेमोरीज, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने तो नहीं देखा है तक अपने लाइफ में. इट इज सेड दैट इलॉन मस्क की ऐसी ये मेमोरी, एक बार पेज देख लेता हो जाता, बट ये एक्सपेक्टेशन नहीं है किसी से. किसी के पास है तो किसी के पास एक्सेप्शनल वो होगी शायद इस चीज की. ऐसा होता नहीं है, और ये एक्सपेक्टेशन भी नहीं है. मोर इम्पोर्टेंटली सर फिर जो आपकी अप्रोच है, प्रीलिम तो हो जाएगी सर, जो प्री के क्वेश्चन है वो तो हो जाएंगे एमसीक्यू वाले. सर फिर कंटेंट कैसे बनेगा डेली आंसर राइटिंग का, आंसर राइटिंग वगैरह? पहले सबसे पहले हमारे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, फिर हम उस नॉलेज को एक्यूमुलेट करेंगे, हमारे दिमाग में चीजें घुसेंगी. अभी इफ आई आस्क यू समथिंग अबाउट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, आपको याद करना पड़ेगा, आपको डिटेल नहीं होगी. धीरे धीरे करते करते कंटेंट एनरिच होगा, उसके बाद आंसर राइटिंग पे हम जाएंगे. यू कैन नॉट डू दैट इनिशियली. अभी तो बेस बनेगी. इट विल टेक एटलीस्ट 3-4 months टू बिल्ड द बेस.
then you will go on to answer writing. This will take time. I will not tell you anything which is not true. Time लगता है इसमें, धीरे धीरे होगा. आप 3 से 6 महीने मान के चलो. 3 से 6 महीने के बेसिक रीडिंग और एनालिसिस के बाद जो बेसिक बुक्स पढ़ लोगे, अच्छे आंसर लिखने लायक आप हो जाओ. ठीक है सर, थैंक यू. वेलकम. Shritha, would you like to ask a question? Yes, sir. Am I audible? Yes. Good evening, sir. Your story was Good evening. very Good inspiring. evening. Yes, Shritha. Like, I'm a beginner. I started my preparation right now, and I'm preparing to write my exam at 25, sir. Like, should I start my mains writing practice now itself, or should I wait till a year and get prepared in such a way to write? You have time, Shritha, and like I said, we always feel that we should start business writing because we're thinking ahead of time. Fact of the matter is that this will progress in gradations. First layer of knowledge has to be built. Like what Dalpreet was saying, he's reading history and he has not captured history completely. He has some vague idea of what all happened. There will be a foundation. Then on foundation, that knowledge will be enriched, and then you are capable of writing better answers. You can write answers right now. No one is stopping you from it. Nothing bad will happen if you write them. But at the same time, it will not really come out like you want. For answers, the prerequisite is to have the knowledge firsthand. But I need to have the content in my brain in order to write about it well. You know what I mean? And Yeah, I understand. the level of questions in the mains, they will not ask direct questions. So suppose the question is, analyze the consequences and outcomes of the British policy on education. Suppose this question comes. If they ask this question, first they expect you to know what education reforms that the British had done. Correct? Hunter Commission, this commission, that commission. That you need to know to answer this. Then you need to be able to analyze it. You need to know that in history there was a debate about language in education, and there was a debate: should Indians be taught in vernacular language? Should Indians be taught in English? Yeah. This is all knowledge. See, we are not even talking right now about writing it. This is all just knowledge. So that knowledge first has to be acquired. That's what I'm saying. Okay, sir. Thank you, sir. Welcome. Prince, would you like to ask? Prince Kumar, you can ask if you want, but first you'll have to unmute yourself. Vishwas, go ahead, Vishwas. You can ask a question. Good evening, sir. Sir. Oh, okay. Let Prince go first. Yes, Prince. हाँ, हेलो सर. हेलो प्रिंस. सर सी सेट के लिए क्या करें? सी सेट के लिए कुछ समझ में नहीं आता है. सी सेट के लिए क्या करें? सी सेट सर. के लिए इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस, तो ऑब्वियसली है कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और मैथ की प्रैक्टिस. द बेटर क्वेश्चन इज व्हाट हैव यू डन फॉर सी सेट सो फार, जो आपको नहीं समझ आ रहा है. सर इस साल का सी सेट तो थोड़ा बहुत भारी लगा क्योंकि मैंने दिया है 30 नंबर आ रहा है सर. इसके लिए अदर आगे बढ़ाने के लिए क्या कर? सी सेट के लिए ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये अगर लेवल रखा यूपीएससी ने, इसके लिए हमको एक्सपर्ट गाइडेंस और प्रैक्टिस चाहिए होगी और 2-3 महीने की तैयारी चाहिए इन ऑर्डर टू सॉल्व सच क्वेश्चंस. मेरी पर्सनल इंट्यूशन ये है कि इतना डिफिकल्ट पैटर्न ये नहीं करेंगे कंटिन्यू, एंड दे विल रिवर्ट टू द ओरिजिनल पैटर्न. जैसा ओरिजिनल है वैसा वापस होना स्टार्ट हो जाएगा. उसके लिए सी सेट के लिए क्या करते थे? आपके जो 30 आप बता रहे हो 30 आ रहे हैं, इज दैट इन बिकॉज ऑफ मैथ की वजह से आ रहे हैं कि इंग्लिश की वजह से आ रहे हैं? सर मैथ की वजह से आ रहे हैं. मैथ की वजह से आ रहे हैं ना. देयर इज वन वेबसाइट, एक वेबसाइट है brilliant.org. क्या बोले सर? brilliant.org करके एक वेबसाइट है. हाँ सर. उसके बहुत इंटरैक्टिव और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत अच्छे उसमें एक्सरसाइजेज और गेम्स हैं मैथ के, उनको देख सकते हैं. अगर 30 आ रहे हैं तो मतलब शायद कुछ फंडामेंटल्स में ही कमी है ना. फंडामेंटल्स सॉलिड कर देगा वो. पेड है, उसकी एक पॉइंट के बाद जितना फ्री है आप यूज कर लो उसको. उसके बाद अच्छा लगे तभी लेना पेड, उसका नहीं तो मत लेना. आई हैव यूज्ड इट माय सेल्फ.
मेरे हिसाब से it is one of the best interactive tools for math education out there. ट्राई करके देखिए उसको. ठीक है, थैंक यू सर. थैंक यू. Yes, Vishwas, go ahead. Vishwas, you can ask a question if you want. I'm audible. Good evening. Good evening. Yes, yes, you are. Sir, actually, my age, I'm not eligible for UPSC because my age is 32. So I'm not, I would not be able to give UPSC, but I'm trying for UPPSC instead. और अभी तक सर मैंने जो भी एग्जाम्स जैसे दिए हैं तो मैंने ये नोटिस करा है उसमें मेरे 50% मार्क्स आए हैं और मैंने कोई बुक ऐसे सच फॉलो नहीं करी है कि मैं कोई बुक से पढ़ रहा हूँ पर्टिकुलर. मैं प्रीवियस ईयर के जो पेपर रहते थे उनको ही लगाता था और उसके ही बेस पे जाके जो गवर्नमेंट एग्जाम्स रहते थे स्टेट लेवल के उनको दे के आता था. तो अभी मेरा पूछना ये है कि जैसे मैं यूपीपीएससी के लिए देता हूँ उसमें तो एज लिमिट है मेरी, मैं उसको दे सकता हूँ, तो मुझे कौन सा वो मतलब कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, मतलब बुक खरीदनी चाहिए कि या मैं प्रीवियस ईयर के पेपर ही लगाऊं वही काफी है, या फिर दूसरी चीज ये भी मुझे पूछनी है कि मुझे जैसे जब सॉल्व करने में बैठूं पेपर देने बैठूं तो कौन सा सब्जेक्ट मैं पहले सॉल्व करूं. यूपीपीसीएस और यूपीएससी में ओवरलैप है बहुत ज्यादा, मोर और लेस सेम पैटर्न है जी. सबसे पहले तो यूपीएससी से एलिजिबिलिटी नहीं है तो कोई बात नहीं, यूपीपीसी क्लियर करने के चांसेस हैं. आप कह रहे हो बहुत ज्यादा पढ़ाई करे बिना भी ठीक चल रहा है सो फार, ठीक है. मेरे हिसाब से जो ग्रेडेशन है टॉपिक्स की, जो ग्रेडेशन है सब्जेक्ट्स की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, मेरे हिसाब से हिस्ट्री या ज्योग्राफी पहले होना चाहिए. क्यों? इसलिए नहीं बिकॉज नाम ज्यादा सुना है इन सब्जेक्ट्स का, इसीलिए बिकॉज सपोज मान लीजिए अब अल्टीमेटली करंट अफेयर्स पे आना पड़ेगा आपको, राइट? यूपीपीसीएस हो या यूपीएससी हो. यस सर. बहुत सारी जगह इन दोनों बॉडीज में आपको देखोगे आप करंट अफेयर्स और स्टैटिक में कोई डिफरेंस नहीं है. अर्थक्वेक, कहीं अर्थक्वेक हुआ है तो अर्थक्वेक का क्वेश्चन आ जाएगा, टेक्निकल क्वेश्चन ही आ सकता है. अभी इस बार प्रीलिम्स में आया था जैसे फॉर एग्जांपल. ज्योग्राफी बिकम्स द फंडामेंटल फॉर मेनी करंट अफेयर्स. सो आई पर्सनली प्रेफर ज्योग्राफी पहले हो क्योंकि बहुत चीजों की बेस बना देता है वो. एक दूसरा ज्योग्राफी करके एनवायरनमेंट की बेस ऑटोमेटिकली बन जाती है. दैट इज वेरी मोर और लेस ओवरलैपिंग. तीसरा, जब आप ह्यूमन ज्योग्राफी करोगे एट सम पॉइंट यू विल नोटिस इंडस्ट्री कहाँ पर है, माइंस कहाँ पर है, रिसोर्सेज वगैरह ये सब चीजें करनी पड़ेंगी. यस सर. इट किक स्टार्ट्स यू टुवर्ड्स इकोनॉमी. यस सर. सबसे अच्छा बेस मेरे हिसाब से ज्योग्राफी का बनता है. यस सर. हिस्ट्री ज्योग्राफी में से जो बेटर लगे आप पहले कर लो. हिस्ट्री के साथ भी ऐसे ही है. इफ यू अंडरस्टैंड हिस्ट्री तो बहुत हद तक पॉलिटी इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ हिस्ट्री. ब्रिटिशर्स के जो रिफॉर्म्स थे वो धीरे धीरे वही आगे बढ़ के चलते चले जा रहे हैं. तो एक कंटिन्यूएशन है हिस्ट्री और पॉलिटी में. ईदर वन ऑफ द टू आप स्टार्ट कर लो, व्हाटएवर इज प्रेफरेबल टू यू. और दूसरी चीज जो आपने दैट वन क्वेश्चन यू डिड नॉट आस्क, इट इज इंपॉर्टेंट. करंट अफेयर मतलब आप चाहे ये करो या ना करो, करंट अफेयर्स पे पकड़ बनानी रखनी जरूरी है यूपीपीसीएस के लिए तो खास कर. तो साइमल्टेनियसली एक बार चलते रहना चाहिए. जी सर, मैं न्यूज़ देखता रहता हूँ और मतलब मैं एज सच कोई न्यूज़पेपर पर नहीं देखता हूँ. ऑनलाइन जो आते हैं जैसे अन अकेडमी की न्यूज़ हो गया, वर्ल्ड अफेयर्स क्योंकि वो सारी चीजें मैं देखता रहता हूँ. और सर मुझे और मैंने ये भी पूछा था सर कि ये भी बता दीजिए कि मैं क्या बुक्स लेके पढ़ाई करूँ, जो कॉम्पिटिटिव बुक्स आती है उनके थ्रू पढ़ाई करूँ, या मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के पेपर के थ्रू कैसे मतलब किस तरह से करूँ. आपने तो सब्जेक्ट बता दिया कि कैसे कैसे करना है, कौन सा सब्जेक्ट. क्वेश्चन की जरूरत तो पड़ेगी ही सूनर और लेटर. तो वो तो एक किताब होनी ही चाहिए. किताब नहीं तो इंटरनेट पे मिल जाएंगे आपको. दूसरी बात, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स की भी जरूरत पड़ेगी. सब्जेक्ट स्पेसिफिक है. जैसे हिस्ट्री तो पढ़नी ही पड़ेगी ना विपिन चंद्रा से आपको. इधर दैट और स्पेक्ट्रम जो आपको पसंद आए. ओके सर. एक तो बुक लिस्ट का जहाँ तक सवाल है, बुक लिस्ट आई विल बी सेंडिंग इन द मेंटरशिप प्रोग्राम. आपको ईमेल में भेजूंगा. बट ब्रॉडली आई टेल यू व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज दैट हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बेस है, ज्योग्राफी के लिए भी एनसीईआरटी बेस है, बट इट इज नॉट इनफ. बट ज्योग्राफी के लिए गोची लियोंग पढ़ने की जरूरत नहीं है. गोची लियोंग लोग मना करते हैं. और इनफैक्ट जो एक्सपर्ट्स हैं जिनसे बात करता हूँ कहते हैं गोची लियोंग की जरूरत नहीं, ऑप्शनल सब्जेक्ट में जरूरत पड़ती है, नहीं तो नहीं पड़ती.
इकोनॉमी में 12th की एनसीईआरटी है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, अच्छा ठीक है, सारे ब्रॉड कॉन्सेप्ट उसमें मिल जाएंगे आपको, वो भी पढ़नी ही चाहिए। ये बेयर मिनिमम बुक लिस्ट है जो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ अभी। यस सर। एनवायरनमेंट के लिए कोई टेक्स्ट बुक मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, और श्रीराम जी। वगैरह आईएएस की आपको मिल जाएंगे, बट इतना ज्यादा उसमें कंटेंट है दैट यू विल गेट लॉस्ट। यस सर। आप इन 3 चीजों का बेस बना सकते हो, और आफ्टर दैट यू कैन सिंपली सप्लीमेंट विद करंट अफेयर्स। दिस विल टेक केयर ऑफ रफली 50%। ओके सर। ये रहेगा मेरे हिसाब ओके से। सर, थैंक यू सर। थैंक यू। Yes, Royal, you can ask a question if you want. Good evening, sir. Am I audible? Yes, good evening. Yes, you are. Sir, I have given my prelims this year, and I believe my CSAT have been missed by 20 marks, and my GS1 would have been missed by 10 marks. That's not bothering me. There is a lot of time left. I will prepare for this year, where I am lacking by understanding. My problem area is mains, sir. To write a good answer, we should have good notes. How to prepare that good notes like toppers, like crisp with good data? If we prepare that notes so that we can add from our dynamic part from newspaper or from magazines. That's my problem, sir. How to prepare good notes for means? Yeah, I'm going to try and show this to you. In fact, instead of just talking about it, we will try to show it by sharing my screen. Okay. If Horus can send that article, Shivani, yes, I'll keep it in mind. I'm actually giving people a chance based on, first come first serve basis. But first I must answer his question. His question is a good one, and I think that is a problem which everybody faces. Ultimately, everyone will face this whole issue of how to make good notes. So here is what I do. I'm trying to connect to the page where I'll be able to show you, but here is the fundamental idea. When I read a book, suppose you read a book, and let's suppose that book is Bipin Chandra. When you read the book for the first time, do not worry about the details. I'm going to mute you just for a minute. Yes, so don't worry about the details in the first reading. In the first reading, do only 2 things. Tick mark or put slight marks or slight underlining between things which you know you will have to come back to. अगर कहीं कुछ important, obviously कुछ important मिल गया है और पता ही है कि ये करना है, so you just put a mark there and you go ahead. You don't do anything more than that. That is what you do by making. That is how the process of making notes is. If you want to make thorough notes, this is what I did. This is what most people do. Then, when you read the book the second time, make more detailed notes. I like to make notes on the margins. You can choose to make notes on anywhere you want, but here is the point. The point is this: when you make notes, whether you make them on the margin or you make them on a separate copy, that has to be, the notes should be in a form that when you look at them while revising, you should not have to read the whole text. They cannot be a reproduction. You can't just reproduce and all of the whole thing, don't do that for memorization. Write the things which you know are hard to remember. Write the things which can give you a visual snapshot. You know what I would do? And I'll show this to you. It's interesting. Suppose this is the notebook. Suppose I used to have these notebooks. So what I would do is I would fold this page in half like this. I would fold this page in half. So I've made basically a diversion here. And I would write in very small alphabets on this side and on this side. Why would I do that? Because when I would then later come to revise, I would be able to see all this dense information in one spot. You understand? I'm literally reducing the surface area. This is how I always prepared notes. ताकि मुझे revision में बहुत ज़्यादा time ना लगे. I can skim and I can see. And also, one thing I would do is I would always make these diagrams and visually depict क्या है information. अगर कहीं मुझे realize होता है कि okay, this is something which is probably going to fit well in a flowchart, I'll make a flowchart. I'll put that effort to make a flowchart. It's a nice way to capture all that information. The point is this again. I should not have to go back to read the whole textbook again. That is why I make notes.
That is the fashion in which you should make them. That's your answer. And of course, when you join the mentorship program, the free mentorship program, I will send you notes and I will show you what type of notes I'm talking about. Okay. Okay, thank you, sir. You're welcome. Okay, Purnima, go ahead if you want to ask. Hello. Yes, hello. Sir, Yes, you are audible. good evening, sir. Good Sir, evening. thank you for this opportunity. You're welcome. Sir, I just wanted to ask how to enhance my answer writing, sir, because there are lots of resources which we find on internet and everywhere, and we have lots of notes. But when we write the answer, sir, we are confused, totally confused. What are the right words? What are the right points? And how to enhance, how to write so that we can level up just like a top up in UPSC. What the demand exactly? I will try to show this to you. Okay, sir. It is better that I demonstrate it. So what you are seeing now on your screen are answer sheets for Akansha. Akansha Anand, she got 205 rank this time. She's my student. This is how she writes. Are you able to see this? Yes, sir. Notice how she writes. This is a question on growth of the Indian national movement has both a response to and a reason for changes in the British policy in the country. ठीक है, ये question आया. Yes, sir. इन्होंने कैसे लिखा है देख लो. The seeds of the Indian national movement were sown in the later half of the 19th century. Sir, answer is still not visible, sir. Why? So it is only showing some files, sir. It's not visible because new tab might have opened. That's why you have to share that tab. Oh, okay. Yes. No, I think that is he's talking about me. Now it will be visible. Now can you see it? Yes, sir. Yes, sir. So notice this. I'll zoom it for you. This is the question. Growth of the Indian national movement was both a response to and reason for changes in the British policy in the country. Elaborate. Then the Yes, note that the question is elaborate. बस इतना बोला उसने. Yes, sir. इन्होंने क्या लिखा है? The seeds of the Indian national movement were sown in the latter half of the 19th century with the revelation of the true nature of the British rule in India. It compelled colonialist regime to rethink its policies. Then she has made this flowchart. I personally don't recommend many flowchart, but इन्होंने बनाया है, regardless of it. She is describing the nature of the British Empire. Then she uses a subheading: causes of growth of the international movement. Causes के बाद ये बताती हैं the growing vigor of the movement made the government reform its policy, the changes which it caused. अब इन्होंने answer का question कैसे करा? The question was saying that the movement was a response to and a reason for change. She divides it into what the causes were and what the reason for change were. Now, I think it's a decent answer, but I think it can be better. Okay. Noticeable चीज ये है कि question organized है, answer organized है, answer के structure में कोई problem नहीं है, easy to read है, points सारे के सारे valid हैं. Conclusion में क्या लिखा है? Thus the movement had a perceptible impact on the British. तो मेरे हिसाब से this is okay. This is not a very good answer, but at least जो हमारे structuring वगैरह तो हम notice कर ही रहे हैं यहाँ पे, इनकी अच्छी है. एक और देख लेते हैं. Account for the reasons that led to parallel development of nationalism and communalism in pre-independence India. He is writing, the Indian national movement and the rise of Congress shook the foundation of the British Empire. The introduction अच्छी है. The British hence resorted to exploitation of the religious and communal diversity to sow discord in the process. I would say this is a very nice introduction. Can you feel the impact? Yes, sir. आप notice ये करो कि इसने सिर्फ क्वेश्चन को रिपीट नहीं कर दिया है, वही क्वेश्चन को मोड़ के नहीं लिख दिया है, अपने हिसाब से कुछ लिखा है. बात तो वही करी जा रही है, बट लिखने का तरीका अच्छा है. Yes, sir. फिर यहाँ पे शॉर्ट एंड सिंपल, बिल्कुल कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन की जरूरत ही नहीं है.
कभी भी जरूरत नहीं है। सर तो फ्लो चार्ट्स जो हम देखते हैं वो सभी टॉपर्स ने बनाए हैं, उनके जो प्रीवियस ईयर्स की कॉपीज हैं, तो सर ये एसेंशियल है कि हम लोग भी फ्लो चार्ट ही बनाएं उसमें? वो आपको अभी आपको इसमें जो the thing which is popping out of the page is the flow chart. The flow chart does not matter. What you are not noticing is the level of knowledge that they possess, जो इन्होंने पेज पे डाली हुई है. Flow chart is just visually ज्यादा दिखता है. The first thing is to acquire this level of knowledge. Flow chart is not the reason they are getting better marks. The better marks is that they have the knowledge and they are making it presentable with the flow chart. Knowledge is first, flow chart is second. ये बहुत क्लियर है. वो फ्लो चार्ट पे ऑब्सेस नहीं हो जाना है. अल्टीमेटली आप अपना बनाओगे उनको जब आप देखोगे ना, यू विल मेक देम योरसेल्फ. तो ये एग्जांपल्स थे कुछ. एंड अगेन इन द फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम आई विल बी सेंडिंग दीस आंसर कॉपीज वाया ईमेल. ओके सर, थैंक यू सर. थैंक यू. Okay, sir, now let us look at certain questions which are typed. Okay, so what we're gonna do is I'm gonna read the questions out aloud and you can reply verbally. Okay. All right. And so let us start with question is from Shivani Sharma. I am Hindi medium student. Answer writing Hindi medium में होगी क्या? Shivani, as far as I know, it is bilingual, at least in Nirnay I.R.S. Whether it will be in Hindi language or not, I do not know. But somebody, for us, we can make a note of it and we can tell Shivani later the answer to this. पूछ के. Sure, sir. Sure. Next question is, yeah, time management कैसे करें for all subjects? Time management कैसे करें for all subjects? So there is something I had created called the strategizer tool. Strategizer tool एक मैंने create किया था. I will try to show it to you. So this is what I'm saying is very broad. It is not a very scientific or perfect way, but it is a crude way. But अभी फिलहाल आप कर सकते हैं. Take the number of days that you have. Take the number of days that you have available until prelims, roughly. अगर 2024 में देना है तो 350 days के आसपास है आपके पास अभी. Take that, divide that by 15. Take that, divide that by 15, roughly. 15 का एक लॉजिक है, वो लॉजिक में नहीं घुसूंगा मैं. बहुत सारे उसमें कैलकुलेशंस थे. Some time was given for emergency, some time was given for revision, some time was given for procrastination. से margin निकाल के 15 का एक वो आया. Ultimately, divide that by 15. That is the number of days you have for a subject. 1, 2. Second principle: allocate weakest subject first. Weakest subject first principle. अगर आज की डेट में the weakest subject is history, then the first whatever number of days you have, allocate to history and then move on accordingly. Again, this is something जिसके लिए बहुत हमको detail चाहिए. These are questions which require detail. So that is why I have added these whole detailed assignments and resources in that mentorship program. वो आपको मिलेंगे email में, आप देखेंगे. The next question is from दीपिका अग्रवाल. इंटीग्रेट कैसे करें सारे सब्जेक्ट को साथ में लेके कैसे चलें? नहीं हो सकता है सारे सब्जेक्ट साथ में. The best case scenario is 2 subjects at a time, and that too is not a great idea. 2 subjects at a time भी तब जब एक सब्जेक्ट प्राइमरी है और दूसरा सब्जेक्ट सेकेंडरी है. What I'm saying is, suppose the main target is history according to today's plan. Suppose मैं simultaneously एक strong subject पढ़ सकता हूँ. So this is my principle. This is the principle I use, and this is the principle that we will be using. Club the weakest subject with the strongest subject. आप 2 subjects at a time, no more than 2 subjects at a time, ever. Never more than 2 subjects at a time. One rule. Second, weakest subject first. Third, club the weakest subject with the strongest subject. So if the weakest subject is history, आपने history start करा, आपका strongest subject मान लीजिए polity है. जब हिस्ट्री से आप फटीग हो गए, थक गए और उससे ज्यादा नहीं हो रहा है, then you start to read some polity on the sides. That is how I would recommend clubbing the subjects and integrating it. सारे एक साथ possible नहीं है. आपको actually में होगा FOMO. You will have FOMO. आपको लगेगा कि मैं for 15 days I have studied history. I don't know a single thing about economy. You will start to feel
nervous. You will feel कि मेरा कुछ miss हो रहा है. That we have to avoid. You have to stick to this, and that requires a bit of, it requires a bit of discipline, mental discipline. We'll actually give Garima a chance. Garima wants to say something, and we must give her a chance. I'm going to see if she can. Try to give Garima a chance to speak. Yes, Garima, now you can actually speak. You can unmute and you can speak. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. Sir, I want to ask about the geography subject. Sir, ऐसे current question ज़्यादा पढ़ने चाहिए सर या directly book से previous questions ज़्यादा पढ़ने चाहिए? नहीं, अगर तो beginning है तो सबसे पहले geography की NCERT ही पढ़नी चाहिए. उसकी basic knowledge acquire करनी चाहिए. पहले हमको पता होना चाहिए geography में होता क्या है, उसके basic concepts क्या हैं. Ultimately जो सर्कुलेशन होती है विंड की वो होती क्यों है, उस सर्कुलेशन से एल नीनो क्यों होता है, ये कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं. यू कैन अंडरस्टैंड देम. सबसे पहले ये पता होनी चाहिए हमको कि होती क्या क्या चीजें हैं, अर्थक्वेक के पीछे लॉजिक क्या है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या होती है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या होता है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू कैन गेट फ्रॉम एनसीईआरटी, नो प्रॉब्लम. फर्स्ट यू गेट दैट, देन वी वरी अबाउट क्वेश्चंस. सर ओल्ड एनसीईआरटी या न्यू एनसीईआरटी? मेरे हिसाब से न्यू. ओके सर. इसे ज्योग्राफी में सर बहुत से सर वर्ल्ड ज्योग्राफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है या इंडियन? एक्चुअली मेरे को दोनों में डेफिनेटली इंडियन इस बार ही थोड़ा सा आ गया था वर्ल्ड ज्योग्राफी में. इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि इंडियन ज्यादा इम्पोर्टेंट है. अल्टीमेटली इंडिया का एग्जाम है तो इंडियन ज्योग्राफी पे ही थ्रस्ट होगा ऑब्वियसली. सर बेसिकली पहले एनसीईआरटी पढ़ो, करंट क्वेश्चन भी पढ़ना है. एनसीईआरटी आप पढ़ लो, क्वेश्चंस साइमल्टेनियसली यू कैन लुक एट द क्वेश्चंस, बट डोंट वरी अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं. क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, स्टार्टिंग में टाइम लगेगा. जब बेसिक नॉलेज अक्वायर हो जाएगी एनसीईआरटी की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, उसके ऊपर से जब हम करंट अफेयर्स को भी इंटीग्रेट करेंगे तब जाके वो क्वेश्चन सॉल्व होने स्टार्ट होंगे. तो क्वेश्चंस ठीक है बट डोंट गेट ऑब्सेस्ड विद देम इनिशियली. ओके सर. एक्चुअली मैं बायो स्टूडेंट हूँ तो सर मैंने अभी स्टार्ट किया है. एक्चुअली मेरे बीएससी के एग्जाम के बाद मैं स्टार्ट करूंगी. तो सर इसी में कंफ्यूजन था सर. एक मेरी हिस्ट्री थोड़ी सी वीक है, तो हिस्ट्री में क्या करना चाहिए? सेम फंडामेंटल अप्लाइज. हिस्ट्री वीक है तो अल्टीमेटली एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी हमको. एनसीईआरटी इनफैक्ट सबसे इजी टेक्स्ट ही एनसीईआरटी है हिस्ट्री का. हिस्ट्री के बाकी सारे टेक्स्ट डिफिकल्ट हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं, बड़े बड़े हैं. तो आइडियली हमारे को वही करना चाहिए. वी शुड स्टार्ट विद, आई वुड स्टार्ट विद मॉडर्न हिस्ट्री, बिपिन चंद्रा, ओल्ड एनसीईआरटी, क्लासिक टेक्स्ट बुक. तो 6th to 12th क्लास? नहीं, आई वुड गो डायरेक्टली टू मॉडर्न हिस्ट्री, बिपिन चंद्रा, 12th क्लास, मॉडर्न, नॉट एंशिएंट, नॉट मिडिवल. वो भी करने पड़ेंगे बट मैं मॉडर्न से स्टार्ट करता अगर मुझे करना होता. और सर करंट अफेयर से कितना डीप रहता है, मतलब आई मीन टू से कि कितना रहता है यूपीएससी में? बहुत ज्यादा रेलेवेंट. मेंस में भी प्रीलिम्स में भी करंट अफेयर्स को इग्नोर नहीं किया सकता है. और डेफिनेटली एक नजर, एक आंख करंट अफेयर्स पे रहनी चाहिए हमेशा, और इस चीज पे एम्फेसिस देते हैं वो, नो डाउट अबाउट इट. ओके सर, थैंक यू सर. थैंक यू. Yeah. So next question is how to decide optional subjects if we have 2 or 3 in our mind. That's a good question. There is something called optionalizer tool. Some of my students may have heard about it. This is also something that I'll try to show. You know what an optionalizer tool is? I will show this to you. This should be interesting. I think you will be able to capture it just by me showing it. Give me one moment. All right. So I am assuming that you have a few options in your mind, for optionalizer. How
How will you decide what is the best one? Yes, got it. So I will ask 10 questions and you have to answer those questions. Are you able to see this on your screen? Is this visible? Is this visible? Okay. So this is the optionalizer tool. This I designed in order to help people scientifically decide what is the best optional subject. This tool will ask you 10 questions. What you have to do is give a confidence rating on a scale of 1 to 10. Suppose that suppose the subject in question is sociology optional. Suppose it is sociology optional. I ask you this question. I am well versed with the subject and I have had previous academic training in it. If this question is asked, you have to give me a confidence rating. How confident are you of this? If you have, suppose you've done MA or BA in sociology, या पढ़ा हुआ है कुछ कहीं या इंटरेस्ट रहा है, you give it 6 or 7. अगर नहीं तो you give it a low score. So you put your score here. Then the second question is, I have deep interest in the subject, your inclination towards the subject. How strongly do you feel about sociology? If you are very passionate about it, give it more marks. If not, then give it less marks, less of a score. So if I ask this question, the second question for psychology, I would have given it 8 out of 10 because I am interested in it. But if you ask me the same question for, suppose, I don't know, geology, I would not very particularly interested in geology. I would give it a 3 out of 10. So it asks you 10 questions, and based on these 10 questions, calculate your score, compare your score for each of the subject. The one with the highest score is your best choice. The one with the highest score will be your best choice for optional subject. बहुत सोच समझ के ये questions design करे हुए हैं. They will force you to introspect and they'll force you to analyze a lot. बहुत clarity आपको इन questions को देते देते ही आ जाएगी. इसका purpose ही है. So you will have this tool also. I'll send you this tool. I've noted the question, Pradi, working professionals. Porus will send you a link of an article I had written for working professionals. Where I listed all possible ways. Where I had listed all possible ways where you can actually understand as much as possible from it for working professionals. All the tricks I use. So I am a working professional. And for a long time, I was a working professional who was simultaneously juggling this UPSC stuff and the other thing. You can do it. आसान नहीं है. I won't lie to you. It is not going to be easy, but possible है. और possible कैसे है, क्यों है, I will tell you again. उसके लिए I'll allow a full email and everything to you. Okay, sir. Now there are like around 80 questions, so we'll go little brief. So next question is how to start answer writing and how to make current affairs notes. Is there any trick to read the newspaper? Yes, there is a trick to reading the newspaper. That trick is called the daily feeder page. Again, this is something I have to show. Again, this is something that I have already inserted in your this thing. Free mentorship program. तो मैंने आपको कहा था ना ये सब questions मेरे सब सुने हुए हैं. These are things which I have encountered, and because I encountered them, मैंने इनको I had created tools around them. हर एक चीज का एक मैंने tool create किया हुआ है already. जैसे for example, this is your tool for current affairs analysis. Are you able to see this? Is this visible? Okay. So what happens is you take a newspaper, आपने newspaper लिया, आपने हर रोज ये format fill करना है इस newspaper में. You chose an article. Suppose आपने एक article choose करा, आपको लग रहा है UPSC के लिए important है, कोई scheme launch हुई है या कुछ हुआ है, आपने यहाँ पे लिखा scheme launched प्रधानमंत्री something something योजना whatever, आपने यहाँ पे लिखा what is the significance of that, वो भी आपको उस newspaper में मिलेगा. You will find that in the article. Just बहुत bullet points में, बहुत ही छोटे format में, minimum words में लिख देना है यहाँ पे क्या importance है उसकी. Welfare of something जो भी बहुत minimum. Then it will ask you कौन से subject से relate करता है, polity का है relevant, science का है, society का है, जो भी है आप tick कर दो उसको, tick mark. Then it will say 3 keywords, find 3 keywords. 3 कीवर्ड मिलेंगे आपको.
ज्यादातर कभी कभार ज्यादा भी मिल जाएंगे, बट 2-3 मिलेंगे. Note those keywords. That is it. Go on and do this for 10 articles. You will find every day roughly average आपको मिलेगी 6 से 10 के बीच में. आपको कुछ इंपॉर्टेंट मिलेंगे, बस आपको वो भरना हो गया आपका. फिर बाद में I will tell you how to analyze these keywords. That is a separate exercise. This is the whole tool I had created. It took me 6 months to make this tool. This is the most scientific tool ever created for current affairs. And now with Testbook, I am creating a whole application around it. आपके पास ये सब कुछ होगा available. ये तो start है. There are many such things in the pipeline. But the question is answered. Chorus, next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, मेरा क्वेश्चन है कि इट्स फ्रॉम सलमान खान. मेरा क्वेश्चन है कि प्रीलिम्स के लिए जो चीजों को मेमोराइज करना होता है वो करना ही पड़ेगा या बिना मेमोराइज किए बिना भी हो सकता है? वांट टू नो व्हाट यू थिंक. In my opinion, there is a certain base of information that has to be memorized, but जो base है, and that base है, suppose I am asking about fundamental rights. Fundamental rights एक base हो गया. What are the years of the basic movements of the national movement? When was non-cooperation? Quit India पहले हुई थी, non-cooperation बाद में हुई थी. इस लेवल की इंफॉर्मेशन याद करनी पड़ती है, बट याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि आप इतनी बारी पढ़ लोगे कि याद हो ही जाएगी. That is my answer. This foundational level of information is captured by multiple reading. You can share your video. Still the daily feeder is showing. Yes. Have you understood what I'm saying? There is a certain level of knowledge. Suppose important articles of the Constitution, important fundamental rights, important events in history. When was the non-cooperation movement? When was the Quit India movement? This level of knowledge has to be memorized, but no one has to sit separately to memorize it because you will read so much. By the time you go for prelims, इतना पढ़ लोगे आप कि आपको ऑटोमेटिकली याद ये हो जाएंगे. तो हाँ, मेमोरी का कंपोनेंट अच्छा खासा होता है, बट अलग से बैठ के रट्टे लगाने वाला काम नहीं है इसमें. वो अज्यूम करते हैं कि आपको बहुत सारी चीजों का रट्टा लगा हुआ है और आपको बाय डिफॉल्ट लग ही जाएगा. That's the interesting part. Next question is from Shritha. She asks, is it necessary to start mains preparation from the beginning without much content? This is a good question. Now, Shritha is asking if mains preparation should be started from the beginning. So here is the thing. Shritha, I mentioned there are two fundamental requirements for mains. Two fundamental, you can say tests, two fundamental challenges. One is the challenge of writing. This has got nothing to do with content. Writing की effectiveness, clarity, structure कैसी है? ये writing skill है. अगर स्कूल से या कॉलेज से you've been doing something about it, then you have a good base of it. अगर बिल्कुल आदत नहीं है तो you will not have a base of it. The other thing is the content. This is the knowledge. This is what I'm talking about when I say what happened in the Indian national movement, the degree of depth of the facts and the knowledge network you have. These are different things. When I am talking about mains answer writing, yes, in the beginning, expression and writing skills should be practiced. Content comes gradually. That's my answer. Initially, you will start mains answer writing, but you will start the ability to write. You must develop that ability to be able to write essays and ethics and whatever answers are required in nice format in short amount of words. That is a skill. That is a skill. That is not knowledge. Knowledge की तरह उसको consume भी नहीं करा जा सकता है. Knowledge को consume करना easy होता है थोड़ा सा. Skill को develop करना थोड़ा सा difficult होता है. Skill को develop करने में time लगता है. ये writing वाला जो part है ये एक skill है. इसीलिए ये पहले करना चाहिए. When you talk about mains answer writing, this is the component which you should be focusing on. Next, Shivani asks, sir, this was my third attempt and once again I could not clear even the prelims. Being a very serious aspirant, I don't know how to prepare for the next year's prelims as the paper is becoming really unconventional. Two things here. One, you should analyze, first of all, where in detail the problem arises. The difficulty level of the paper cannot be the problem because वो relative है examination. हो सकता है कि here this time you were caught off guard और काफी हद तक maybe आपको शायद anxiety की वजह से उस level का error rate ज्यादा हो गया होगा maybe. But कौन से subjects हैं, कहाँ पे problem है, क्या उस level की knowledge acquire हुई भी है कि नहीं, that brutal fact has to be faced. और अगर नहीं हुई है तो किस subject में नहीं हुई है अभी तक, उस subject की acquire करी जाए. That is my fundamental answer. The second part is this trend.
what happens when the UPSC starts to play around with these games and they start to become arbitrary and unpredictable? Well, my answer to that is just because it happened this time does not mean that it will happen the next time. हमारे पास पिछले 50 सालों का सैंपल सेट है. पिछले 50 सालों में इतना अजीब पेपर नहीं आया. एक बारी आया. इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी बारी आएगा. इसका इनफैक्ट ज्यादा मतलब ये है कि अगली बारी शायद नहीं आएगा. It is 50-1 the ratio. So we should not assume that it will continue to get harder. If anything, it will start to recede back to the old pattern. This is my subjective prediction. That is my answer. सुश्री ऋतुपर्णा रोत्रे आस्क, सर मैंने घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और मेरे ड्रीम्स के बीच में बहुत कंफ्यूजन है कि मैं अपना ड्रीम छोड़ दूं जिसको छोड़ के मैं कभी खुश नहीं रह सकती. यूपीएससी क्लियर ना करना ये डिफरेंट है, पर मुझे एक तसल्ली रहेगी कि मैंने प्रिपरेशन किया. पर सर मैं भी मेन स्ट्रीम से हटके अब जॉब के लिए ट्राई करना पड़ रहा है मुझे भी. सर आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं और ग्रेट मेंटोर हो, बहुत प्रॉब्लम आपने फेस किया है. सर प्लीज टेल मी हम क्या करें. Important question, very delicately I will handle it, and I will say this. What is the name of the question asker who is asking it? Sushri Rituparna. Sushri, my first advice to you is find out who you are. Find out more about yourself. You want to do the UPSC. मेरा एक fundamental question है why. Why का आंसर इतना easy नहीं है. आपको हो सकता है you may require need for achievement. मेरे एक achievement चाहिए, मुझे एक लाइफ में victory चाहिए. तो that is वो UPSC के अलावा भी कई जगह हो जाती है. ठीक है UPSC करना है, I'm not saying नहीं करना है, but it is important to understand why, what is the fundamental emotional reason for it. Sometimes that emotional reason is power. I don't want to feel powerless. I want to be somebody. I want to have autonomy. ये freedom, autonomy, ये सब emotional reasons हैं. UPSC एक जरिया है. It's a platform which gets us these things. It's not the fundamental reason that we get them and that we seek them out. So that truth and that reality has to be faced and understood. That's one. Two, you are right. अगर आप UPSC नहीं करोगे तो आपको एक बारी regret होगा. But life का कोई भरोसा नहीं है. हाँ, मेरे खुद के difficulties थे. I have had many different types of good, bad, ugly experiences. I went into the UPSC. I came out of it, and now I am more excited about life than I was. Now I will do something bigger than I did by clearing the exam. Life खत्म नहीं होती तो और linearly भी नहीं चलती. अगर आपको आज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जॉब या कोई प्रोफेशन करना पड़ रहा है तो हाँ यूपीएससी के प्रिपरेशन में कॉम्प्रोमाइज थोड़ा सा होगा बिकॉज काफी एनर्जी और टाइम आपकी चली जाएगी. वन, डोंट लेट दैट स्टॉप यू फ्रॉम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी. जो हो सकता है वो करो. हर साल प्रिपेयर करते करते लोगों को क्लियर होता है. मेरे बहुत सारे बैचमेट्स हैं, इनका हुआ ऐसे ही. हर साल मैं देखता हूँ. अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे टच में जो पिछली बार भी प्रीलिम्स निकाला था, इस बार भी प्रीलिम्स निकाला है, वर्किंग प्रोफेशनल हैं. ना वो जॉब छोड़ सकते हैं ना वो छोड़ेंगे. वो बस ऐसे कर रहे हैं. वो छुट्टियां ले लेके काम कर लेते हैं, काम चला लेते हैं. और व्हेन यू स्टार्ट दिस जॉब, बीच में रास्ते और बीच में गैप्स मिलेंगे आपको. यू विल बी एबल टू एक्सप्लॉइट दोस गैप्स. डरना नहीं है. सिचुएशन एडवर्स है, सिचुएशन इम्पॉसिबल नहीं है. आपकी जो प्रॉब्लम है, दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट is that situation is not ideal for my UPSC preparation. What should I do? मुझे ये करना पड़ रहा है. हाँ, करना पड़ रहा है तो बहुत लोगों को करना पड़ता है. It is not that impossible also. इतनी एक्सट्रीम भी नहीं है. किया जा सकता है, पर ओपन माइंड के साथ करना है और ये जान के करना है कि मुझे चाहिए क्यों ये, why. और अगर मुझे इस पे नहीं मिलता है तो वो चीज मुझे कैसे मिलेगी. अगर मेरी रिक्वायरमेंट ऑटोनॉमी की है, अगर मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे कोई ना बोले कि मुझे कब शादी करनी है, मुझे कोई ना बोल पाए कि मुझे कब क्या करना है, मुझे चाहिए अपनी खुद की फ्रीडम और पावर, तो मेरे पास वो करने के और तरीके भी हैं. लाइफ में इन्फिनिट तरीके हैं. ये हौसला होना चाहिए हमारे पास. दैट इज माय एडवाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हेलो सर, माय नेम इज मनीष गोयल एंड आई एम डूइंग एमकॉम इन मैनेजमेंट. यूपीएससी मेंस के लिए कुछ टिप्स बताएं और कंटिन्यूटी को कैसे बनाए रखें स्टडी में. कभी-कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं. Again, this is one of those things, you know, which I have been facing and figuring out since a very long period of time.
हाउ टू मेंटेन मोटिवेशन ड्यूरिंग दिस यूपीएससी प्रिपरेशन, जो बहुत लंबी होती है, बहुत डिफिकल्ट होती है, बहुत इमोशनली ड्रेनिंग भी होती है. तो here is what I will advise. One, I will give some advice. Two, I will tell you what I am doing about it, so that you know कि अच्छा यहाँ पर एक structure है, मिलेगा आपको. My advice to you is this: spend 1 to 2 hours a week in executive planning. 1 to 2 hours से ज़्यादा नहीं. 1 to 2 hours in executive planning का मेरा मतलब you are sitting and you are analyzing what amount of time is available and you are dividing that time. This is your planning. बस इससे ज़्यादा planning नहीं करनी. Once a plan is set for the week, you stick to it. Second, once that weekly plan is set, you divide it into 3 tasks per day, no more than 3. 3 tasks होने चाहिए दिन में, no more than 3, and those 3 should be done no matter what. Once you have done those, then you will be on your track, and you will not want to break this. It will develop a pattern, it will develop a habit. Patterns and habits are hard to break. 3, अगर ये पैटर्न और ये डिसिप्लिन और ये चल रहा है ऑलरेडी, तो फिर आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी ऑन द राइट ट्रैक. बीच बीच में अगर मोटिवेशन टूटती है, अगर कभी कभार नहीं कर पाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू फॉरगिव योरसेल्फ. दैट प्रोबेबली मींस आपके सिस्टम को ब्रेक चाहिए था. टेक दैट ब्रेक. इफ 70-80% of your time you are able to the path, 20% of the time you are faltering, you are safe. If it goes below 70%, then you have a discipline problem. And we will discuss later about what I am doing about it. I will, if you come into the free mentorship program, I will send you WhatsApp nudges. I will send you WhatsApp reminders. I will remind you and I will nudge you when the time comes. And I will tell you that you have not done this homework and that you are lagging, you are procrastinating, and I will give you advice on how to stop that. Porus, we should ask Rakesh because he has been waiting for a long time. Yeah. Please unmute if because you have the control there. No, I can't seem to find him now. Rakesh, you can actually try to raise your hand. I think he's suggesting in the question answer book, so question answer like section. So yes, okay, found him. Yes, Rakesh, what is your question? Hello, sir. Yes. Sir, good evening, sir. Good evening, Rakesh. सर मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. सर मैंने सर सबसे पहले जब ये प्रिपरेशन स्टार्ट किया था सर, तो सबसे जो फर्स्ट बुक मैंने खरीदी थी सर, वो आपके द्वारा लिखी हुई है, द अल्टीमेट चीट बुक. अच्छा. तो वो सबसे फर्स्ट बुक थी, मतलब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था सर. और उस बुक से सर मतलब मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला सर. पास्ट 2 ईयर से सर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और मतलब मुझे लगता है कि सर मैं एक टीचर भी हूँ, यहाँ केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ सर मैं. तो मुझे हर पर डे 5 to 6 आवर ही सर मिल पाता है. और उस 5 to 6 आवर में सर मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है सर, कि मतलब मुझे समझ नहीं आता है कि कितना देर कौन सा सब्जेक्ट करूं और कब मेंस आंसर राइटिंग कब करूं. ये सर मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है. आपको राकेश मैं म्यूट कर रहा हूँ फॉर द टाइम बीइंग बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड नॉइज. आई विल ट्राई टू गिव यू सम एडवाइस. अगर दिन में 5 से 6 घंटे या 4 से 5 घंटे आपको मिल रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम. मुझे लगता है कि हमको अपने एक्सपेक्टेशन सेट कर लेने चाहिए और यही एक्सपेक्ट करना चाहिए कि 4 से 5. और वैसे राकेश, आप इफ यू आर अ टीचर देन यू नो द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन इज humans are not able to concentrate deeply for more than 4 hours a day. 4 to 5 hours a day deep focus से ज्यादा लोग नहीं कर पाते हैं. एक्सेप्शनल केसेस में शायद ज्यादा कैपेसिटी होती है. मेरे हिसाब से ये टाइम पीरियड बहुत है. डेली अब देयर आर 2 थिंग्स. एक चीज होती है आपने बैठ के एग्जीक्यूटिव प्लानिंग करी, जो आपने बोला कि आपकी प्रॉब्लम है कि आपको ये नहीं पता लगता कि कब क्या करना है वगैरह वगैरह.
you are lost in this planning part. So after the planning is done, only then you can actually focus. That's one. Two, the deep focus on the content itself. If I am, अगर मेरे सामने history है, अगर मेरे सामने history है, तो फिर मैं history के बारे में सोचना चाहता हूँ. I want to be immersed in the history. I want to think about what is written. I want to form images in my mind. I want to be deeply interested. तो मेरी concentration बनेगी, तब मैं उसको absorb कर पाऊंगा. दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती. एग्जीक्यूटिव प्लानिंग और हिस्ट्री का डीप फोकस साथ में नहीं हो सकता. इसीलिए मैंने अभी से पहले जब आंसर करा था क्वेश्चन, तो मैंने बताया था कि हफ्ते में 1 या 2 घंटे की एग्जीक्यूटिव प्लानिंग हो जाए, उससे ज्यादा नहीं. उसमें सिर्फ पर्पस ये है, हफ्ते का टारगेट सेट हो जाना चाहिए, बस. क्लियर. बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हो सकता है वो टारगेट. दैट टारगेट हैज टू बी रियलिस्टिक, बट दैट टारगेट हैज टू बी चैलेंजिंग. 4-5 घंटे जो दिन के हैं, उसके हिसाब से एक टारगेट हम सेट करेंगे. फिर एवरी डे वी विल फिगर आउट हाउ टू मेक दैट हैपन. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी हैव टू मेक श्योर जो हम दिन के 3 टारगेट सेट कर रहे हैं वो अचीव हो, नो मैटर व्हाट. पैटर्न, इट विल स्टार्ट टू बिल्ड अ पैटर्न एंड यू विल स्टार्ट टू गेट मोर एफिशिएंट. तो एक बार आपका ये एग्जीक्यूटिव प्लानिंग वाला पार्ट खत्म होता है, क्लियर हो जाता है. अब आपके पास 5-6 घंटे हैं सिर्फ डी फोकस के लिए. अब आपको पता है कि आज मेरे एजेंडा पे है ही हिस्ट्री. अब मैं वहां पे बैठ के ये नहीं सोच रहा कि मुझे हिस्ट्री में क्या पढ़ना था, कैसे पढ़ना था, मेन आंसर राइटिंग करूं नहीं करूं. नहीं, मेरा गोल क्लियर था. मेरा गोल ये था कि ये चैप्टर पढ़ना है, ये आंसर लिखने हैं, खत्म. मेरा टास्क आज का हो गया. आई कैन फोकस ऑन दैट एंड नथिंग एल्स. दिस स्टेट वी नीड. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड जो मैं कह रहा हूँ? यस सर. तो इसके लिए एक और सर मेरा क्वेश्चन था कि सर मुझे मेंस आंसर राइटिंग मतलब ऑलमोस्ट कितना कंटेंट पढ़ने के बाद से मेंस आंसर राइटिंग मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए? जैसे मुझे लगता है सर कि मैंने मतलब एंशिएंट खत्म कर लिया है, एंशिएंट हिस्ट्री खत्म कर लिया है, तो मुझे एंशिएंट पे आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए सर? एंशिएंट खत्म कर लिया तो हाँ, अटेम्प्ट करी जा सकती है. क्यों नहीं करी जा सकती? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं. अगर खत्म कर दिया है, और खत्म करने की डेफिनेशन अलग अलग होती है लोगों की, बट अगर आपको लग रहा है कि आप एक बार कर चुके हो तो हाँ, यस, लिखा जाए. 1-2 आंसर लिखे जाएं. बहुत चीजें आपको पता चलेंगी अपने आप को. खुद यू विल गेट फीडबैक अबाउट योर ओन परफॉर्मेंस. जी सर. बाकी हम ऐसे अगेन इन द एक्सपेरिमेंटरशिप प्रोग्राम ये सब डिटेल में मैं एनालाइज कर चुका हूँ. ये सब प्रॉब्लम्स इतने मैंने सुने हैं स्टूडेंट से कि मैंने हार के टूल ही क्रिएट कर दिया था इन चीजों के आसपास. तो आपको मैं आई विल सेंड इट टू यू. बहुत 90% प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे वो. जी. Next question is from Hariom. A self-study student, where should I do test series for pre or mains? This is the question. Self study student. So देखो honestly I'm not saying this because of any bias. मुझे नहीं लगता टेस्ट बुक से बेटर क्वेश्चन बैंक कहीं है यूपीएससी के लिए. दे आर द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड बेस्ट फॉर प्रीलिम्स. मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी रेकमेंड किया था. क्वेश्चन की क्वालिटी हमेशा अच्छी होती है, क्वेश्चंस हमेशा एनालाइज होते हैं, क्वेश्चंस एग्जाम की वैल्यू को मिमिक करते हैं, एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल को. हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन होती है, क्वेश्चन मल्टीपल लैंग्वेजेस में होते हैं. This is a platform which does only this. This is so far this is their area of speciality. There is no question about the prelims part. Mains के बारे में I have about 170 students जो इस बारी बेस लिख रहे हैं. This 170 students, उनके बीच का consensus ये है कि around 30% people prefer Vision IAS, around 40% people prefer Forum IAS. Some people prefer Vajiram and these miscellaneous issues. तो फोरम और विजन सबसे ज्यादा प्रेफरेंशियल हैं, बट इतना नहीं फर्क पड़ता है. सारे मोरलेस एक ही टाइप के कैटेगरी के हैं ये. तो यू कैन चूज एनी वन ऑफ द बेटर वन, एनी वन ऑफ द गुड वंस. नीडलेस टू से, इफ आई एम एबल टू लॉन्च अ टेस्ट सीरीज, इट विल बी बेटर देन देम. दैट इज माय क्लेम, दैट इज माय गोल. अदरवाइज आई वुड नॉट डू इट. तो उस टाइम पे यू कैन सी, बट आज की डेट में ये दो अभी तक सबसे प्रेफरेंशियल चल रहे हैं. Next is Nimish. He asked, I want to know if I should continue with my optional of psychology or should I change it because last year I was not able to get that check due to lack of available mentors. I got a decent score but was not able to satisfy myself when I actually got my score.
It's a risky decision actually, because with psychology there should be no problem of mentors. तो अच्छे हैं psychology में. Psychology, in order to make the decision of changing it, you have to be careful, because it is whatever you take will take a long time. Steep learning curve होगा. Whatever you do when you take it. Why don't you use the optionalizer tool? That optionalizer tool which I just described. Why don't you try to use that and analyze if psychology is actually the problem or not for you, and it will tell you a little bit more about what you need to do. So समझ के करना है change. It can have an impact on your whole attempt, this decision. I will not be so hasty to suggest anything here because I don't have enough data, to be honest. I don't know what category, what level of questions you are writing. You say that you got decent marks in psychology, and if the marks are actually decent, then मुझे तो लगता है कि it is worth sticking to psychology. अगर इतना already invest कर लिया है तो अगर कोई blunder हो रहा है तो बात अलग है. So I'll give you one example. I have two students, brilliant students हैं, और mathematics optional. They had mathematics optional. पिछले 3 attempts, they are writing mains. मतलब they don't have a problem with clearing prelims at all, anytime. और तीनों बारी मैथ की वजह से उनका स्कोर खराब हो रहा है बहुत, और थोड़ा भी नहीं, बहुत ज्यादा खराब हो रहा है. They are getting 50-70 marks less than typical. It makes sense for them to leave it. So one of them has switched over to sociology. वो वाला decision समझ में आता है. But going from psychology to sociology or psychology to geography, careful about it. And so that's my decision. Word of caution. Analyze it more before you take the decision. Yogi asked, after memorizing once, revise or the presentation will be better. He's asking or suggesting, I'm not sure. Shivani is asking, sir, ऐसे की आंसर राइटिंग के लिए नोट्स सेंड कीजिए. I will send not only notes but full assignments along with video tutorials, along with the model answers, that one of which I showed you. I have a whole data bank. I will share all of this to you. You just have to be sincere and pay attention to that, to those emails when they start coming to you. Everything I will send, essay comprehensively we will cover. That is my expertise. Purnima is asking, what is the right approach for answer writing? What exactly UPSC wants? How to enhance my writings? Exactly तो कुछ भी नहीं है, because it depends on paper to paper, subject to subject. अब GS1 में it is typically more analysis and factual knowledge combined. In ethics also it is the same. In essay it is not like that. In essay it is more of expression, dimensional analysis, the depth of maturity, expression, and like I said, evocative sentences. How well is it presented? So it depends on paper to paper, but typically they are looking for 3 things. 1, very good structure. 2, very good clarity of knowledge. 3, very good communication about the content. Knowledge भी देखेंगे वो detail में, किस level की vocabulary use करी आपने. Suppose they ask you a question about irrigation. In India, irrigation is a problematic area, something. They ask, what type of technical words do you use? Are you able to identify different types of irrigation methods? Do you have some data about per hectare of irrigation which is being used? All these types of, this level is required in the questions in mains. But like I said, we will talk much more about it. But for now, I will just judging from your questions, take your time again. दीपिका अग्रवाल is asking, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी कुछ नोट्स अवेलेबल करवा दीजिए सर, होंगे क्या? I will try my best. I have noted the problem, and I had also this experience last year. बहुत students हिंदी मीडियम में, तो मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कर पाया था उनके लिए, but जो भी मैं कर पाया था वो आपको मिलेगा. It will be made available, and I will also try that whatever is being created, simultaneously किसी तरीके से वो convert हो और आपको मिले. That will be my attempt. I will try. Next question is, I am BSc student with statistics as my main subject. I am planning to choose statistics as my optional. Please give me any suggestions, sir. I am very confused. Statistics is something I do not understand, honestly, as an optional subject. I have no exposure to it, but I have created a tool, like I mentioned, this optionalizer tool.
This will help you. This optionalizer tool will help you. That is what it is. That is what it does. Use this optionalizer tool. How you will use this optionalizer tool, I'll try to share the link with you. For us, if you can share the link and pin it, maybe it will help people. Yeah, it will be shared. Next question is, if you are sharing, sir? I'm looking at trying to locate it. Okay. Yes, you were saying? Yeah, next question is how to manage time with daily college routine and how to revise effectively. Anisha. Yes, I know this problem is another time management issue. So for everyone, I'm sharing this link. This is the optionalizer tool. That link over there is the optionalizer tool. It contains not only the tool, it contains a whole set of reasons for why that tool. It also contains a video description. The video tutorial, that is the link right there. I'll try to, I don't know if I can pin it, but please take a note of this. And I'll also share a link with you for this time management issue. And I'll actually even try to give me a minute where I'll actually show you and share the link, because there's a lot, you have to unpack a lot. This time management thing isn't just one thing. So is this visible to you? Yes, it's visible. All right. This is the article. You'll have to log in, I suppose. But once you log in, it has a lot of detail. We'll need to log in. And this whole article I'll be sharing with you. And again, you know, I poured everything I possibly could in this article. This is my blog where most of these things I have added in detail. To ask me to switch on again. Anyway, I'll share this link with you and we'll remove the wall, this login wall. You can actually check it out. And there is also, in fact, on my YouTube channel, a detailed video about time management, and I'll also be creating more such videos. I will address this question in detail. I will address it for not only college people, I will address it for working professionals also. Not to worry. Course, next question. Yeah, next is Sunil Kumar Chauhan. He's asking, I'm a working professional, get around 4 to 5 hours daily, appeared in 2023. Score was approximately 72 to 77 by different keys. CSAT 74, 77. This is my last attempt. I think I am good at answer writing and have good academics. How to approach my last attempt? What are the problem areas he's setting? He shared his marks with different answer keys, and marks are around 70 to 75. And it is his last attempt. 2024 will be his last attempt. He's thinking that he's good at academics. So how should I approach on last attempt? But if it is his last attempt, then it should be better if he is able to analyze various different, all the questions, and he not the question, the subjects, and figure out where exactly is he lacking. So my advice to him is that he needs to go one level deeper into the analysis and figure out which subjects are being problematic. Why is it 76? Where is he lacking? Is it the economic type questions that he's not getting? Is it the history that he's not getting? Is it the geography? Is it the CSAT? That is the level of detail I would like to have before I can tell him what exactly he should be doing. But I've shared this YouTube video for time management in the chat, which everyone can refer to. And I've explained all of it in this video. Next question, Boris. After that, most of the questions are from working professionals, and the same questions on mains and current affairs and answer writing are getting repeated by various people. Okay. Like questions are more or less, yeah, extremely overlapping questions are there. All right. If anybody would like to ask a question independently, Devanshu, do you want to ask something about optional subject? Although I did answer, I'll allow you to do that. Devanshu, if you want, you can ask a question. If there anybody who wants to ask a question, it would be a good time. And but we'll close in a few minutes. Yes, Dimple, what is your question? Hello. Yes, hello. Good evening, sir. Good
Good evening. Sir, I am pre-qualified, then optional subject choose the geography. Pre-qualified this time? Yes, sir. Then you should be joining the super group. सर ज्योग्राफी मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा है, तो सही इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करें हम? Geography optional subject के लिए, that is what I'm saying, you should join the super group. I have a group of 175 students who have cleared prelims, pre-qualified. Yes, sir. Or they will, what is happening in that group? It's a very private, closed group. उस Yes, closed group में हो ही ये रहा है कि I am teaching questions and I'm teaching essay, and other people Yes. will be helping me with the optional. So in optional, in geography optional, I Yes, am sir. trying to get Kapil Bharadwaj sir to assist Yes, people. sir. तो Yes, geography sir. optional पे मेरा कमांड नहीं है, to be honest. और उसके लिए जो लेवल चाहिए वो एक्सपर्ट ही बता सकता है. तो Yes, sir. come join that group. Message for us that group, that link will be shared. Don't share that link anywhere. It's a very closed group. Come join. वहाँ Yes. पर बहुत कुछ हो रहा है, आप देखोगे वहाँ. Yes, sir. दिवांशु, Sir. आपने एक गूगल फॉर्म का लिंक शेयर करूंगा अभी. ओके. You Yes, have to sir. fill the, you have Yes, to fill the qualification thing, and you will be added there. Okay. Okay, okay. Thank you. Dimple, do you have a question you can ask? हेलो, गुड इवनिंग सर. Good evening. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मैंने अभी थोड़े टाइम पहले प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, तो मुझे आंसर राइटिंग अभी से स्टार्ट करना चाहिए कि पहले सिलेबस कवर करना चाहिए? मुझे लगता है आपको पहले फाउंडेशनल लेवल ऑफ नॉलेज एक्वायर कर लेनी चाहिए. फाउंडेशनल लेवल ऑफ नॉलेज एक्वायर हो जाती है जब एनसीईआरटीज का एक लेवल ऑफ रीडिंग, एक राउंड ऑफ रीडिंग कंप्लीट हो जाता है. दिस इज नॉट अ वेरी साइंटिफिक वे ऑफ डूइंग इट, बट एक आर्बिट्रेरी लेवल का वो मैं बता सकता हूँ आपको. अगर वो हो चुका है तो हाँ, हम आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, बट नॉलेज एक्विजिशन का कोई शॉर्टकट नहीं है, वो करना ही पड़ेगा. दैट इज प्राइमरी एट दिस स्टेज, एट द बिगिनर स्टेज. जी. और ये कि सीसेट को कब से करना चाहिए? यदि मैं 24 को टारगेट कर रही हूँ तो 24 को. और व्हाट इज बहुत द, नर्वस फील हो रहा है. आपका क्या, व्हाट टाइप ऑफ लेवल डू यू हैव फॉर सीसेट? अभी सीसेट के लिए मैंने कुछ नहीं किया है. अभी मैं जीएस कर रही हूँ. Is your GS कर रहे हो? Is it very weak? Is math a huge problem or what? मैथ में मैं एवरेज हूँ. मैथ के लिए एवरेज कब से करना चाहिए? इस बार का सीसेट का पेपर देख के, वैसे व्हाट आई सजेस्ट इज प्रीलिम से 4 महीने पहले सीसेट एक बारी करके खत्म कर देना चाहिए ताकि टेंशन खत्म हो जाए उसकी. इस बारी का पेपर देखने के बाद आई एम रिकमेंडिंग 6 to 7 months before prelims we should dedicate at least 15 days to 1 month for CSAT. So now if you calculate, that will happen around November. I think it will happen in November or December. उस टाइम पीरियड में सीसेट पे इंडिविजुअल एक महीना कॉन्सेंट्रेटेड फोकस करके उसको साइड कर देना चाहिए. बट अभी नहीं घबराने की जरूरत है मेरे हिसाब से. जी. क्योंकि अभी you have a lot to do right now. Too many things. जी. न्यूज़पेपर कौन सा फॉलो करना चाहिए? और मैगजीन भी, एक पर्टिकुलर मैगजीन जो हम डेली फॉलो कर सके, वीकली? देखिए, न्यूज़पेपर या इंडियन एक्सप्रेस, उनका यूपीएससी वाला जो वर्जन अभी निकाला है उन्होंने, या हिंदू. तीसरी कोई सजेशन नहीं है. मैगजीन्स मुझे लगता है ओवरवेलमिंग हो जाएंगी, बहुत ज्यादा कंटेंट में होता है, कोई कर नहीं पाता है डाइजेस्ट उनको. स्टार्टिंग में आप टेक इट इजी, टेक इट स्लो. अगर 2 महीने रेगुलरली आप न्यूज़पेपर ट्रैक कर पा रहे हो, 2 महीने, देन ट्राई टू मूव टू मैगजीन. मैगजीन कौन सी? आई थिंक इधर आउटलुक और योजना. योजना अभी नहीं, बट first you get used to the newspaper and get this foundational knowledge first. It takes time. फिर वही बात है. I know you are very eager to make sure it is done, but ऐसा होता नहीं है. वो टाइम लेगा ही लेगा अपना. This exam is such. न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे पढ़ना जरूरी है ना? Definitely. न्यूज़पेपर को स्किप नहीं कर सकते. नहीं,
कर सकते हैं, देखो कर सकते हैं लोग, अल्टीमेटली करते हैं, आप भी करोगे, बट अगर हो जाता है तो कोई बात नहीं, बट हाँ करना चाहिए। बेस्ट सबसे आइडियल सिचुएशन यही है कि न्यूज़पेपर साथ में चलता रहे, उसके एडिटोरियल्स पढ़ते रहे, वैसे ही नॉलेज एक्विजिशन बहुत हो जाती है उससे। एक क्वेश्चन और है कि ऑप्शनल को कवर करने में कितना टाइम लगाना चाहिए? दैट डिपेंड्स, क्या ऑप्शनल का प्रायर एकेडमिक ट्रेनिंग है, अगर नहीं है तो टाइम लगाना चाहिएगा, तो क्वेश्चन इज नॉट रेलिवेंट, टाइम कितना मांगेगा वो इज द मोर रेलिवेंट क्वेश्चन। अगर ऑप्शनल ऐसा है जो कभी नहीं पढ़ा है, इट विल टेक एटलीस्ट 4 months, एटलीस्ट मिनिमम। मेरा जियोग्राफी है, तो जियोग्राफी तो पहले पढ़ा हुआ है, जीएस में भी पढ़ते हैं। आई वुड से एटलीस्ट 3 months इट विल टेक, अच्छे लेवल पे प्रिपेयर करने के लिए। सर क्या आप जियोग्राफी के लिए बुक लिस्ट सजेस्ट कर सकते हैं? नहीं, ऑप्शनल के लिए तो नहीं, ऑप्शनल के लिए अगेन देयर इज समबडी मच बेटर देन मी, उनका आपको मैं आई विल इंट्रोड्यूस यू टू हिम, वो बताएंगे, वो ही इज एब्सोल्यूट एक्सपर्ट इन इट। जियोग्राफी ऑप्शनल इज नॉट माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, इसलिए मैं कमेंट नहीं करूंगा उस पर। आई डोंट वांट टू गिव एनी एडवाइस व्हिच आई एम नॉट एब्सोल्युटली श्योर ऑफ। जी जी सर। Okay sir, you may take one more and we gonna wrap up now. All right, let us ask Khrija what she's wanting to say. Good evening. Yes, good evening, Khrija. Sir, how to prepare for language qualifying exams that are conducted before the mains? Khrija, are you attempting mains right now this year? No, sir. I'm planning to attempt prelims the next year, 2024. Right, you don't have to worry about that. What is your which language will you be attempting this optional paper? Sir, I would like to choose statistics as my optional. No, the compulsory language I meant to say. Sir? Your compulsory language paper, no? You are asking about? Yes, sir. Language paper, right? Yes, sir. So that is not much of a challenge. हो ही जाता है. Everyone is able to do it. बहुत बेसिक लेवल होता है उसका, इतना पता होना चाहिए. I was horrible in my Hindi because I had no touch with it. But एक हफ्ता पढ़ा था, I solved two previous year questions. वो हो गया था, ठीक ठाक निकल आया था कुछ. Not a cause of concern. उससे बहुत बड़े cause of concerns हैं, वो नहीं होगी ज्यादा प्रॉब्लम. तब तक आप पहुंचोगे ना स्टेज पे प्रीलिम्स के बाद, तब टेंशन लेंगे इस चीज की, अभी नहीं जरूरत है. अभी हम फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि हम वहां पहुंच पाए. Okay, sir. Sir, what is the correct time to start reading current affairs for prelims 2024? अभी स्टार्ट हो जाना चाहिए. Okay, sir. Where can I read current affairs? Means, can you suggest any website? I would rather suggest a newspaper, and that newspaper I would say for now should be the Hindu or the Indian Express. Okay, sir. Thank you, sir. You're welcome. Thank you so much for patiently answering all the questions, sir. So that's so it was a kind of pleasure. you. I would have hoped and liked to spend more time, or I would have really hoped to see their faces, to see the faces and have a conversation with them. But hopefully that too will happen. होगा जल्दी से जैसा होगा. But जो भी मुझे अच्छा लगा, I hope you got some value out of it. And although this was not a topical type of a conversation. बहुत सारे अलग-अलग चीजों के बारे में बहुत कुछ बताया. मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था आपको बहुत डिटेल में बताने के लिए. जो मैंने बता पाया मैं I did, but trust me when I say this, कि जितने भी क्वेश्चंस थे आपके, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये, इन सब क्वेश्चंस पे ना कि सजेशंस, टूल्स, इन एक्चुअल टूल्स आई हैव क्रिएटेड, और एक एक करके सारे टूल्स मिलेंगे आपको अपने ईमेल्स. यू कीप नाउ you've come for this session, I will admit you into the free mentorship program. You will get emails. उन emails में explicit detail होगी. हर एक email में एक वीडियो ट्यूटोरियल होगा, हर एक email में टूल्स होंगे, एक एक क्वेश्चन आंसर होगा आपका, without you even having to ask. ये जो गाइडेंस का प्रॉब्लम है ना कि गाइडेंस नहीं मिलता है यूपीएससी में, दिस आई एम सॉल्विंग. ये नहीं बचेगा प्रॉब्लम ये बचेगा कि मेहनत बहुत करनी पड़ती है, वो आपको करनी पड़ेगी, उसका मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा. You have to work hard. How exactly you have to work hard, what you need to do, what you need to study, where from all of this you leave, I will take care of that. Thank you very much. I will see you soon. Bye-bye.